नीरज चोपड़ा जी का मैच एक साथ देखेंगे पहाड़ी ब्रदर्स लाइव चैनल पर। तो जो ये लाइव स्ट्रीम देख रहा है वो ज़रूर देखना। डायमंड लीग शुरू होने वाली है आज नीरज भाई की। तो चलो अपना हाफ एन आवर रीडिंग सेशन को कंप्लीट करते हैं। The prevalence of these fears as a curse to the world runs in cycle. For almost 6 years, while the depression was on, we floundered in the cycle of fear of poverty. During the World War, we were in the cycle of fear of death. Just following the war, we were in the cycle of fear of ill health, as evidenced by the epidemic of disease which spread itself all over the world. Fear are nothing more than state of mind. One's state of mind is subject to control the direction. Physicians, as everyone knows, are less subject to attack by disease than ordinary laymen. For the reason of physicians do not fear disease. Physicians without fear or hesitation have been known to physically contact hundreds of people daily who were suffering from contagious diseases as smallpox without becoming infected. Their immunity against the disease consisted largely, if not solely, in their absolute lack of fear. तो मतलब देखो ये कह रहे हैं कि जो फिजिशियंस होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, वो ऐसे चिकन पॉक्स वगैरह इन सारी चीज़ों को चेक करते हैं तो इनको डर नहीं लगता है। जब डर नहीं लगता तो वो सारी बीमारी उनको अटैक नहीं करती। जो डरता है उसको जल्दी होता है। ठीक है, तो वही देखा होगा कुछ लोग घर में बैठे बैठे उनको करोना हो गया था। जब करोना चल रहा था पीक पे, लोगों को घर बैठे बैठे करोना हो रहा था क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में ही वो डर बना लिया और वो खुद में ही उन्होंने नॉर्मल बीमारी को भी बड़ा बना लिया। Their immunity against the disease consisted largely, if not solely, is their absolute lack of fear. Man can create nothing which he does not first conceive in the form of impulse of thought. Following this statement comes another of still greater importance, namely men's thought impulses begin immediately to translate themselves into their physical equivalent. Whether those thoughts are voluntary or involuntary, thought impulses which are picked up thought through the ether by mere chance, thoughts which have been released by other minds, may determine one's financial, business, professional, or social destiny just as surely as do thought impulses which one creates by to intent and design. We are here laying the foundation of presentation of a fact of great importance to the person who does not understand why some people appear to be lucky, while others of equal or greater ability, training, experience, and brain capacity seems destined to ride with misfortune. This fact may be explained by the statement that every human being has the ability to completely control his mind, and with this control, obviously, every person may open his mind to the tramp thought impulses which are being released by the other brains, or close the doors slightly and admit only thought impulses of own choice. Nature has endowed men with absolute control over but one thing, and that is thought. This fact, coupled with the additional fact that everything which man creates begins in the form of a thought, leads one very near to the principle by which fear may be mastered. If it is true that all thought has a tendency to clothe itself, it is in its physical equivalent, and this is true. Any reasonable room for doubt, it is equally true that thought impulses of fear and poverty cannot be translated into terms of courage and financial gain. The people of America began to think of poverty following the Wall Street crash of 1929. Slowly but surely, that mass thought was crystallized into its physical equivalent, which was known as depression. This this had to happen. It is in the conformity with the law of nature. The fear of poverty. There can be no compromise between poverty and riches.
The two roads that lead to poverty and riches travel in opposite directions. If you want riches, you must refuse to accept any circumstance that leads towards poverty. The word riches is here used in its broadest sense, meaning financial, spiritual, mental, and marital states. The starting point of the path that leads to riches is desire. In chapter 1, you receive full instructions for the proper use of desire. In this chapter on fear, you have complete instructions for preparing your mind to make practical use of desire. Here then is the place to give yourselves a challenge which will definitely determine how much of this philosophy you have absorbed. Here is the point at which you can run, profit, and foretell accurately what the future holds in the store for you. If after reading this chapter you are willing to accept poverty, you may as well as make up your mind to receive poverty. This is one decision you cannot avoid. मेरी लाइव स्ट्रीम अब ठीक हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. This is one decision you cannot avoid. If you demand riches, determine what form and how much will require to satisfy you. You know the road that leads to riches. You have given a road map which is followed will keep you on that road. If you neglect to make the start or stop before you arrive, no one will be to blame but you. This responsibility is yours. No alibi will save you from accepting the responsibility if you now fail or refuse to demand the rich of life. Prince calls for but one thing. Incidentally, the only thing you can control and state in the state of mind. A state of mind is something that one assumes. It cannot be purchased. It must be created. Fear of poverty is a state of mind, nothing else. But it is. हेलो शशांक भाई, वेलकम बैक टू द चैनल. दो अच्छी खबर है, जल्दी से दो, जल्दी से दो. हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल. एक्चुअली थोड़ा सा नेट का इशू हो गया था. अब आई होप कि सब क्लियर आ रहा हो. पहले तो ये है कि एक मेडल अश्योर्ड हो गया इंडिया के लिए. यस, ब्रॉन्ज मेडल इज़ कंफर्म. सिल्वर मेडल के लिए लड़ाई होगी, देखते कौन जीतेगा. 2 लोग हैं हमारे साथ. कौन है? किदाम्बी भाई का पहला ही मैच लीजिए से. हाँ, तो किदाम्बी भाई जीत सकते हैं यार. फॉर्म में होंगे तो जीत जाएंगे. किदाम्बी भाई हरा सकते हैं. पीवी सिंधु साइना खेल रही है. अच्छा, वो आमने सामने तो नहीं खेल रही. पहला मैच ही आमने सामने हो गया. फियर ऑफ पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ माइंड, नथिंग एल्स. कह रहा है कि गरीब होने का जो डर है वो स्टेट ऑफ माइंड होता है. लोगों को लगता है पैसे जमा करने से पैसे बढ़ते हैं, पर वो पैसे हमेशा बढ़ते हैं अगर आप उन्हें कहीं एसेट्स में लगाओ तो. ठीक है. जो डरते हैं उनका पैसा घटता है. जो खुले दिल से पैसे को बांटते हैं या फिर लगाते हैं तो उनका बहुत ही पैसा आता है. बट इट इज़ सफिशिएंट टू डिस्ट्रॉय वंस डायरेक्शन ऑफ अचीवमेंट इन एनी अंडरटेकिंग, अ ट्रुथ which became painfully evident during the Depression. This fear paralyzes the faculty of reason, destroy the faculty of imagination, kill off self-reliance, undermines enthusiasm, discourages initiative, leads to uncertainty of purpose, encourages procrastination, wipes out enthusiasm, and makes self-control an impossibility. It takes the charm from one's personality, destroy the
possibility of accurate thinking, diverts concentrations of effort, it masters persistence, turns the willpower in nothingness, destroy ambition, be cloud in the memory, and invites failure in the every conceivable form it called love, and assassinates the finer emotions of the heart, discourages friendship, and invite disaster in 100 forms, leads to sleeplessness, misery, and unhappiness, and all this despite the obvious truth that we live in the world of abundance of everything the heart could desire, with nothing standing between us and our desire excepting lack of a definite purpose. ठीक है, तो यहाँ पे इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमें चाहिए वो होना इस दुनिया में, ठीक है। बस एक चीज़ की कमी है, लैक ऑफ डेफिनेट पर्पस, पर्पस नहीं है लोगों के पास। हर्षी वेलकम बैक। असली मसाले सच सच MDH विटामिन प्रोटीन। हेलो यशवंत पाटिल, हाउ आर यू। हेलो हर्षी, शशांक भाई। विटामिन भाई मसाले बहुत खाते हो लगता है। आज रात को 11:30 बजे मैच है यार, मज़ा आएगा, पर उससे ज़्यादा नींद आ रही है। सुबह से लाइव कमेंट्री कर रहे हैं ना। अमूल दूध पीता है रशिया। हु विल विन सात्विक सिराज। सात्विक सिराज, देखो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से बताऊं तो सात्विक सिराज के लिए मैच थोड़ा मुश्किल होगा। बाकी अगर दिल से बोलूं तो टीम इंडिया जीत सकता है। फॉर्म में चल रहे हैं अपने दोस्त लोग, फॉर्म में चल रहे हैं और वो कुछ अच्छा करेंगे। गोल्ड के लिए लड़ेंगे कल, सॉरी परसों। अगर कल जीतते हैं तो फिर गोल्ड का मैच होगा परसों। दिस फियर पैरालाइज द फैकल्टी ऑफ रीजन हो चुका है। इट टेक्स द चार्म ऑफ वंस पर्सनैलिटी, डिस्ट्रॉय द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूरेट थिंकिंग, diverts concentration of effort, it masters persistence, turns the willpower into nothingness, destroy ambition. एक सेकंड, इंटरनेट का इशू हो रहा है, लैग हो रहा है क्या? मेरा स्ट्रीम लैग हो रहा है तो बताना, चेक कर रहा हूँ। ये पता नहीं बार बार बीच में इंटरनेट कनेक्शन ख़राब क्यों हो रहा है। चलो इसको देखता हूँ, मैं एक बार देख कर आता हूँ। अगर ठीक होता है तो दोबारा आऊँगा, वरना मुश्किल होगा। लाइव स्ट्रीमिंग ज़्यादा अटक रही है आज। चलो फिर इसको ठीक करके आऊँगा। चलो बाय शशांक भाई, बाय हर्षी, बाय विटामिन प्रोटीन। मिलते हैं अपने पहाड़ी ब्रदर्स वाले चैनल पर, जब हम उस पर करेंगे बहुत ही शानदार लाइव